Bismillahirrahmanirrahim. Hello and welcome back, friends. Welcome to my channel Kami Biology. In this video lecture we are going to talk about cytoplasm. Okay, so let me write cytoplasm. This is actually the video lecture regarding with the cell. And now first of all, what is cytoplasm? If we see the word cyto means what? Cyto means cell, and plasm means fluid, or we can also say jelly like substance, jelly, or we can say liquid. Okay, so if we see, a cytoplasm is actually a fluid or the water material, or we can say it is a jelly like material or liquid which is present inside the cell and outside the nucleus. What does it mean? It means, if let's suppose this is the cell portion, okay, now inside the cell what we have, let's suppose this is the nucleus. Now the portion, as you are seeing, inside the cell and outside the nucleus, means this one portion, as you are watching, let me draw with a blue marker this one portion. These portion are called what? These portion are called cytoplasm. Okay, so if we see, it contains 80% water molecules. Now cytoplasm was discovered by a scientist named, let me write the name of the scientist, named Rudolf Kolliker. In 1863. Okay, so this cytoplasm was discovered by Rudolf von Kolliker in 1863. If we see, the cytoplasm is actually contain three main portion. Okay, how many portion? They contain three major portion. Three major portion. Now the first portion which are present in the cytoplasm, this is called the cytosol. The first one is called what? The first one we call that cytosol. Cytosol. Okay, so the first portion is about the cytosol. Now which one portion is the cytosol in the cytoplasm? This one portion, as you are watching, means the water is actually the cytosol, or we can say the cytoplasm when contain water molecules, or when the cytoplasm contain solute material. For example, we can say that sugar, proteins, carbohydrates. When the cytoplasm contains such that material, so we call that a cytosol. Okay, so let me write. It may be contain what? It may be contain 80% water. Okay, moreover, it may also contain sugar, it may also contain protein, it may also contain lipid, etc. Means all the essential molecules which are actually useful for the cell. We can also say ions as well. Okay, so all these are called what? All these are called solute. Now it contains these kind of solute, or we can say ion as well. Now this is called what? This is called the cytosol. It also contains, if we see, now this is the first portion of the cytoplasm. The second portion of the cytoplasm is, if we talked about the second portion, so the second portion of the cytoplasm is about cytoplasmic organelles. Cytoplasmic organelles. As I told you that organelles means little organ, so let me write here little organ. What does it mean? It means mitochondria, ribosomes, endoplasmic reticulum, Golgi bodies. Okay, so means this cytoplasmic organelles are those portion of the cytoplasm which contain all the important organelles, or we can say membrane bounded organelles. Membrane bounded organelles.
Okay, for example, cytoplasm, ribosome, endoplasm, reticulum, Golgi bodies. So these are called what? These are called cytoplasmic organelles. If we see all the organelles are present in their specific way, means cytoplasm are means that ribosomes are present their specific way, Golgi body are present their specific way, endoplasmic reticulum are present their specific way. All this is possible by the cytoplasm. Actually, cytoplasm suspend these kind of we can say these kind of little organs. Okay, so this is about the cytoplasmic organelles. Now the third portion of the cytoplasm is what? The third portion of the cytoplasm, if we talked about, this is about the inclusion bodies. Inclusion bodies. Now what does inclusion body means? Inshallah, I will make a separate videos lecture on inclusion body. That's what is inclusion body. Actually, the cytoplasm also contain this inclusion body as well. It is actually a storage molecules, or it is a storage material which can store all the essential nutrients which are actually needed for the cell survive, and which are actually needed to provide which are actually needed for the cell energy. Okay, so these important material which stored by the inclusion bodies, these material will be the, let me write the name, fat, like lipids, and we can say glycogen, like glucose, sugar. So let me write glucose, sugar, and we can also say that it also contain crystals, like calcium oxalate, means in plant cell. Okay, in plant cell crystal are present. So like calcium oxalate. So that's about the main or we can say that's about the main portion, or three main, although there are a lot of portion, but these are the main or major portion of the cytoplasm. Okay, so let me once again explain you that what actually happened. Let me explain in Urdu or in Hindi language. साइटोप्लाज्म हमारे पास एक जेली लाइक या एक फ्लूइड या एक वाटर सब्सटेंस होता है से, या हम ये भी कह सकते हैं एक लिक्विड सब्सटेंस होता है जो कि सेल के अंदर और न्यूक्लियस के बाहर, अगर हम ये देख ले ये हमारे पास कौन सा सेल है, ये हमारे पास यूकैरियोटिक सेल है। ठीक है, ये हमारे पास कौन सा सेल है, यूकैरियोटिक सेल है। हालांकि साइटोप्लाज्म हमारे पास प्रोकैरियोटिक सेल में भी होता है, से मींस इट इज आल्सो प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल एज वेल। बट हम ये भी कह सकते हैं कि असल में ये सेल जो मैंने बनाया ये यूकैरियोटिक है, क्योंकि इसमें आपके पास क्या है, न्यूक्लियस है, तो ये आपके पास यूकैरियोटिक सेल है, यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, अच्छा जी, पहली बात। दूसरी बात ये कि ये साइटोप्लाज्म आपके पास एक ऐसा जेल मटेरियल या एक ऐसा लिक्विड मटेरियल या एक ऐसा फ्लूइड जो कि आपके पास सेल के अंदर और न्यूक्लियस के बाहर मौजूद होता है। से जैसे कि आप देख सकते हैं ये ब्लू कलर जो मैंने ड्रॉ किया है। अच्छा जी, पहली बात। दूसरी बात ये कि साइटोप्लाज्म को सबसे पहले एक साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था जिसका नाम हमारे पास रोडोल्फ वॉन कोलेकर था। 1863 में उसने ये डिस्कवर किया था। सही है, तो साइटोप्लाज्म को अगर हम तफसील से पढ़े या अगर हम उसको देख ले तो साइटोप्लाज्म में 3 पोर्शन बहुत ज़्यादा कॉमन है या 3 पोर्शन बहुत ज़्यादा अहम है। असल में साइटोप्लाज्म में बहुत से पोर्शन है लेकिन 3 बहुत ज़्यादा अहम पोर्शन है। सबसे पहले जो पोर्शन उसका है वो आपके पास है साइटोसोल। साइटोसोल है क्या चीज़? साइटोसोल असल में आपके पास वाटर मटेरियल्स होते हैं या वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे कि आप ये ब्लू कलर के देख सकते हैं। लेट सपोज ये आपके पास क्या है, साइटोसोल से। साइटोसोल ना सिर्फ आपके पास वाटर मटेरियल मीन्स 80% इसमें आपके पास वाटर मटेरियल होगा, तो ना सिर्फ आपके पास 80% इसमें वाटर मटेरियल होगा साइटोसोल में, बल्कि इसके साथ साथ आपके पास साइटोसोल में क्या हो सकता है, शुगर, प्रोटीन्स, लिपिड्स और सोल्यूट, ऑल दीज मटेरियल आर आल्सो प्रेजेंट। सही है, तो शुगर, लिपिड्स, प्रोटीन्स और इसके साथ साथ आयंस जैसे कि पोटेशियम, कैल्शियम, तो ये सारे साइटोसोल के हिस्से हैं।
दूसरी बात, जो दूसरा पोर्शन है वो आपके पास है साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स। अब साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स क्या चीज़ है? मिसाल के तौर पर जो लिटल जो छोटे छोटे ऑर्गन आपके पास होते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, गोल्गी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ये तमाम तर ऑर्गेनेल्स, इसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स या लिटल ऑर्गन या मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स भी इसको हम कहते हैं। अच्छा जी, ये तमाम तर ऑर्गेनेल्स जो सेल के अंदर मौजूद होते हैं, अपने अपने जगह पर, एक खास खास एरिया पर ये मौजूद होते हैं, तो ये किसकी वजह से पॉसिबल थी? इन्हीं साइटोप्लाज्म की वजह से पॉसिबल। साइटोप्लाज्म असल में ये क्या करते हैं? इसको एक स्पेसिफिक, एक खास किस्म का वे प्रोवाइड करता है, एक साइट प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से तमाम तर चीज़ें अपनी अपनी जगह पर सस्पेंड होते हैं। अच्छा जी, तीसरे जो मेन इंपॉर्टेंट पोर्शन, इसमें आखिरी जो इंपॉर्टेंट पोर्शन है इंक्लूजन बॉडी, वो आपके पास, सॉरी, साइटोप्लाज्म का जो इंपॉर्टेंट पोर्शन है वो आपके पास है इंक्लूजन बॉडीज। इंक्लूजन बॉडीज क्या चीज़ है? ये भी आपके पास साइटोप्लाज्म का एक मेजर पोर्शन है जो कि न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करता है। इंक्लूजन बॉडी के हवाले से इंशाल्लाह मैं एक अलग तफसीली वीडियो बनाऊंगा। सबसे पहले एक थोड़ा सा माइंड में आप लोग रख लें कि ये आपके पास एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो कि स्टोर करता है न्यूट्रिएंट्स को, या हम इसको ग्रेन्यूल भी कह सकते हैं। मीन जो स्टोरेज मॉलिक्यूल्स आपके पास होते हैं, क्या स्टोर कर सकते हैं? फैट्स, जैसे कि मिसाल के तौर पर लिपिड्स, ग्लाइकोजन मिसाल के तौर पर ग्लूकोज, शुगर मॉलिक्यूल्स और कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह, क्रिस्टल्स जैसे कि कैल्शियम ऑक्सलेट से, इन तीनों के अलावा बहुत से मॉलिक्यूल्स जैसे कि कार्बन, फास्फेट और चीज़ें भी स्टोर कर सकते हैं। लेकिन ये ख़ास किस्म की चीज़ें, इसलिए इसके हवाले से मैं अलग वीडियो तफसील से बनाऊंगा। अच्छा जी, तो ये ख़ास किस्म के मॉलिक्यूल्स इंक्लूजन बॉडी स्टोर करते हैं, और ये भी साइटोप्लाज्म का एक अहम और मेन पोर्शन है। सही है? So that's all about the cytoplasm. I hope you understand about the cytoplasm. Inshallah, in the next video lecture, we will talk about some other organelles about the cell. So please like the video, share the video, subscribe the channel, and also press the bell icon to get updates of more cells lecture. Thank you so much. Take care. Allah Hafiz.